हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड आज हम फिर वापस आए हैं अपने अगले सक्सेस स्टोरी के साथ जो हम कंप्लीट अपने जो भी हम हमारे पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर इंडस्ट्री इवन अपस्किल ज्वाइन करने से पहले भी एंड अपस्किल ज्वाइन करने के बाद भी एंड एज यू ऑल नो कि एज अ कम्युनिटी ठीक है हमारे कोई स्टूडेंट हमसे दूर रहते नहीं है ठीक है जो भी एक बार कम्युनिटी में ऐड हो जाते हैं सो टुडे वी हैव मिस्टर संतोष हियर who is based out in Goa and इनकी एजेंसी है which is basically on copywriting जो कि current market ट्रेंड का काफी ज्यादा डिमांड है ओके एंड दैट इज व्हाई हिज एजेंसी इज डूइंग इज वेरी गुड इन इट ही हैज अ वेरी स्ट्रांग क्लाइंट होल्ड एंड ओवर 2 इयर्स 2 साल से ज्यादा से ये बहुत अच्छी तरह से इस फील्ड में काम कर रहे हैं सो आज हम इनकी स्टोरी जानेंगे हाउ ही स्टार्टेड दिस थिंग एंड कैसे कॉपीराइटिंग ही इन्होंने चूज किया ठीक है हाउ दिस थिंग इन्वॉल्व क्या क्लाइंट बेस है एंड क्या स्ट्रगल होता है बोथ ऑन टीम बिल्डिंग फेज एंड क्लाइंट सर्विस दोनों इंडिविजुअल पार्ट है एंड एज एन एजेंसी ओनर हमें सब कुछ टैकल करना होता है सो लेट अस हियर हिज एक्सपीरियंस फ्रॉम ऑल दीज इयर्स सो संतोष जी प्लीज कंटिन्यू Yeah, hi everyone. It's a pleasure to be here. Thanks for having me, Abhishek ji. So I'll speak in a mixture of Hindi and English, and I hope everybody is okay with that. श्योर So यू आर फ्री देखिए मेरी I have a very strong background in IT. मेरी शुरुआत जो शुरुआत की पोर्शन थी करियर की that is primarily in IT, close to till I was 35, 36. I was into IT, core IT, servers, networks, everything. So जो फेमिलियर है उनको पता रहेगा विल रिंग अ फ्यू बेल्स बट देन आफ्टर दैट मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था मेरे एक फ्रेंड की साइबर सिक्योरिटी की कंपनी थी दे आर इनटू रिसर्च एज वेल सो मैं बोला चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं फिर दैट एक्साइटेड मी टू क्विट माय करंट कंफर्ट जोन ऑफ द आईटी जॉब जो मैं कभी छोड़ता नहीं शायद मैं आज भी आईटी का बंदा रहता अगर आई वुडंट हैव टेकन दैट स्टेप and then what happened in that job was I ended up joining it for technical reasons लेकिन उसमें काफी सारा pre-sales था and IT mein pre-sales is very similar to marketing. So, you have to focus on the features of the product, on the benefits of the product. You have to persuade, the B2B clients and all that. So, wahan pe kahin na kahin, without even knowing the meaning of the word marketing, main ye field mein ghus gaya. So, that was my first initiation to marketing without even knowing what marketing was. And I was there for a couple of years and I learned a lot of things, technical, non-technical, B2B marketing, a lot of that. एंड उसके बाद में मेरा जो नेक्स्ट स्टेप था आई वांटेड टू डू माय ओन थिंग आई वांटेड टू बिल्ड माय ओन थिंग सो आई set up my own computer training institute where we offered basic IT courses and office skilling courses and all that. So कहीं ना कहीं वो सेटअप करते करते आई रियलाइज मार्केटिंग कितना इम्पोर्टेंट है एक entrepreneur के लिए एक बिजनेस के लिए एंड दैट इज वेयर आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर पीपल हु कुड हेल्प मी विद मार्केटिंग and मैं रहता हूँ अभी I live in a small state of Goa which is not very big which is not very known for anything other than beaches so marketing sales तो रही दूर की बात and we have an industrial estate here that's about it and the biggest problem with the small states small places small towns is वहाँ पे जो professionals हैं digital marketing professionals हैं उन्हें वो एक्सपोजर नहीं है उनको वो ट्रेनिंग लेवल नहीं है जो which is expected of any world class digital marketing professional. So that is the biggest problem that I faced because when I was trying to hire somebody to market for me, जो लोग आ रहे थे they had half baked knowledge, self taught, YouTube guru guys, यहाँ वहाँ से थोड़ा बड़ा सीखा, stitch everything together and offer a service and monthly आपको SEO का 10,000 लगेगा, इसका 15,000 लगेगा, सोशल मीडिया में हम आपको डिजाइन करके देंगे, अच्छे डिजाइन का 5,000 और बहुत बेहतरीन डिजाइन का 15,000, something like that. So and they didn't even tell me back then. This was around 2018 2019 कि यार सोशल मीडिया पोस्ट करके कुछ नहीं होने वाला. So ये काफी सारे services देखे मैंने and over a period of time as a consumer I matured through these bad experiences and I realized that as an entrepreneur I need to have my technical skills एक अलग जगह but I need to have my own money in the game. Like मुझे खुद वो skills सीखने जरूरी है
And that is where I started searching for somebody who could teach me those skills. And to be honest, before I landed with UppSkill in around 2020, 21, was it? Hmm. I Hmm. had been through at least 10, 12 different courses. And that is, I believe, the journey that anybody will undertake. Let's see, because something like digital marketing, which is so much in demand, is also the one which is the most misrepresented in the online world. So Definitely, for definitely, it will every be. every good institute like UppSkill, every good professional like the team that we have here, there are at least 10 different people who claim to be who they are not. So वो सब चीजों के बीच में मैं इतना उलझ गया, इतना फंस गया. I spent literally lakhs of rupees on a lot of profession. Learned a little. मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे regret है, because I took those steps. That is how I landed with UppSkill. That is why I am able to see the value that UppSkill is Exactly. offering. Even those are few mistakes Yeah. which made you learn many things. Absolutely. So all of those things. कहीं ना कहीं, even if you feel that didn't help you so much, आपके expectations के उतने, कहीं ना कहीं वो चीज आपको help करता है take the next step forward. And that is बिल्कुल. always a step forward. That may not be upward, but that is definitely forward. So वो सब करने के बाद में, that is when I started to get interested in copywriting, and especially writing copywriting, because a lot of Indian gurus, इनका नाम नहीं लूंगा मैं, they were just talking about it. Copywriting is a big thing. Copywriting कभी dollars में कमाओगे, pounds में कमाओगे. That idea somehow got etched into my mind. एंड वहां पे मैंने बोला, यार ये अगर लिखने से पैसा मिलता है, तो आई डेफिनेटली नीड टू लुक एट इट, बिकॉज सी एवरीबडी इज इन दिस फील्ड फॉर द मनी. सो इफ समबडी इज गोइंग टू पे यू टू राइट, देन व्हाई नॉट. एंड मुझ में थोड़ा सा राइटिंग का कंपोनेंट था बचपन से. Hmm. Like I used to look at all these Nick Blyton books and Nancy Drew books and all, when I was in sixth standard, seventh standard. And I Okay. used to literally copy the characters and create different scenes with them, and अपनी खुद की डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखता था. तो मुझे Means पता that था कि somehow, yeah, that creativity was from very long ago, for very long ago. But then क्या हो and I गया कि think because it got hidden somewhere in that IT exactly. field. Exactly. I would use the word suppressed, because the traditional Hmm. streams of learning that we have, science करो, commerce करो, arts करो, ये चीजों Hmm. में ना आपका जो natural talent है वो दब जाता है. Very And true. people are not exposed to the fact that यार आप कुछ और भी सीख सकते हो. Hmm. Graduation necessary नहीं है. You have to see. I believe in life, the most important things you need to understand is how relationships. The second thing is understanding how money comes and goes. ये अगर चीजें आपको समझ में नहीं आई है ना, तो एमबीए करो, डबल एमबीए करो, वॉटन से करो, हार्वर्ड से करो, कोई Hmm. कुछ फायदा नहीं है. Exactly. Because and these things are not taught to us by the traditional schooling Hmm. mechanisms and all that. So somehow that got suppressed, and but then I saw an opportunity here. Writing करके somehow I can, it's something that I don't mind doing. Like there are people who are very good with videos, I'm not. So those people should probably continue to do YouTube, regardless. Long term में तो successful होना ही होना है. If you Very true. like writing, if you like the idea of writing, Hmm. just the process in itself, without attaching कि यार 6 months के बाद में मुझे 1 लाख मिलेगा, 12 months के बाद में इतना सक्सेस मिलेगा, कैन आई बिकम द गैरी हेल्बर्ट ऑफ इंडिया. अगर आप वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखो, आप प्रोसेस पे फोकस करो एंड एंजॉय द प्रोसेस, then I believe that you should take those micro steps, and that is exactly what I did. Then I met with so many people. Everybody claimed to say that अरे यार मुझे मुझे मालूम है कॉपीराइट, सब अपने आप को कॉपीराइटर बोल देते, लेकिन very few people were able to guide me. So I started on my own journey. I met a great mentor. उन्होंने काफी मुझे help किया, and then and around the same time in the same year, I landed up with UppSkill as well. And I already had this burning desire कि यार मुझे words के साथ कुछ करना है. And I knew it wouldn't be blogs. Blogs तो मुझे नहीं करना. Blogs is so gone. करना है तो भी maybe I was not so strongly against content, but then I wanted to see what why people अभी content writer है, copywriter को इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं? Obviously because they are making sales. वो क्या कर रहे हैं इतना अलग, दोनों words लिख रहे हैं, दोनों पेज भर रहे हैं. So what is so different about this person that he gets hired, he gets paid by the project, he gets paid in thousands of dollars, और content का रहता है $100-200, thousands उसके ऊपर कभी जाता नहीं. So that thing really intrigued me. It was the money that drew me in initially, and then I slowly took my first. This is basically the whole last 4-5 years of my this thing. So I think a lot of people who want to get into writing may have a very similar path. पता नहीं होगा कि यार क्या लिखना है, कितना लिखना है, कंटेंट में पैसा है, इसमें Hmm. पैसा है. देखिए पैसा बिल्कुल. तो सब में है, पैसा राइटिंग में है.
But the thing is, I mean, it is only there if you're progressing and improving every day and you're adding value to the project. So with every project, if you're growing maybe 1%, by the end of the year, you've grown more than 365%, something like that. सो अगर वो नहीं हो रहा है, आप सिर्फ एसईओ ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, एआई राइटर्स लेके आप गेम खेल रहे हैं, क्लाइंट की गेम कर रहे हैं, आप जिनको जो आपको आउटसोर्स किए उनका गेम कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग. इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑन थिंग्स, यू हैव अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर. अगर आपका व्यू पॉइंट ही छोटा है कि मेरा अभी ये प्रोजेक्ट का पैसा आना है, या ये महीने का मेरा इतना हो गया, मेरा महीने का टारगेट हो गया, देन similarly people will have a similar outlook on you as well. They won't look at you long term. I mean, that is like, I believe that's a law of karma. So आपके जैसा पर्सपेक्टिव है, लोगों का तरफ, आपके तरफ का नजरिया भी वैसा ही होता है. So somehow बिल्कुल, I feel this, exactly. that's how What you're do you going think? to survive for longer. मतलब मार्केट में कंपटीशन की लेवल इतनी हाई है. हाँ, बट इन Exactly. केस ऑफ कॉपीराइटिंग, एज यू टोल्ड वेरी करेक्टली, कि कॉपीराइटिंग एंड खुद को कॉपीराइटर बोल सब लेते हैं, बट इट्स अ टास्क विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, a very good sense of humor and a very good research. एंड इवन मतलब True, जहां तक true. मैं समझता हूँ, एक कॉपीराइटर बनने के लिए यू नीड टू कंज्यूम अ लॉट. जैसे A एक lot. नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर के लिए भी हम बोलते हैं कि अ गुड कंटेंट क्रिएटर मस्ट बी अ गुड कंटेंट कंज्यूमर फर्स्ट, बट एक Exactly. कॉपीराइटर के लिए आई थिंक कि कंज्यूम करने की लेवल बहुत ज्यादा होती है. दे नीड टू कंज्यूम मोर एंड मोर ताकि सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा अच्छा डेवलप हो. राइट. Initially, to almost always like you have to, what I believe is you need to have, like in any field, the fastest way for you to progress would be to, I wouldn't say copy. Copy is a very cheap word because literally अगर मैं copy बोलूँ तो लोग literally वो meaning, word का meaning निकालते हैं. इंडिया में वो literal meaning लिया जाता है. So I would say curate a role model or two, or role model को see what they do and how they do it and try to develop their voice inside of you. आप किसकी रीडिंग पढ़ रहे हो? I mean, how many of us go through, subscribe to good newsletters? There's so many good newsletters and there are so many paid newsletters. I know I subscribe to एक बंदा है यूएस में जो करीबन almost 17 years, 20 years he's been doing email marketing. He's one of the ओके. top email marketing guys in the world. I subscribe to a newsletter जो उसका $99 का उसका newsletter, $97 का newsletter है उसका per month. I subscribe to it और वो print होके घर पे आता है मेरे. So literally, I invest to make sure that I know what he has to say, and he almost always gives you one big idea in every newsletter. जो अगर आप implement करो, तो आपके campaigns will be 2x, 4x, 5x. You will do vastly better on all metrics if you really take it to heart and do it. And he's been doing it for the last, I don't know, last 15 plus years. उसका चल रहा है, वो print होके US से all the way न्यूयॉर्क से, रोचेस्टर न्यूयॉर्क से लेके यहाँ पे आता है. So I believe सब्सक्राइब अगर आप ये नहीं कर सकते, एंड आई डोंट वांट एनीबॉडी हु इज लिसनिंग टू दिस फॉर द फर्स्ट टाइम टू डू सो ग्रो सो डेस्परेट कि यार मैं भी यही कर लूंगा तो शॉर्टकट हो जाएगा. शॉर्टकट नहीं होगा. यू डोंट नीड दैट नाउ. व्हाट यू नीड नाउ इज टू फाइंड 2-5 गुड पीपल हु आर 5 गुड राइटर्स, सब्सक्राइब टू द न्यूज़लेटर्स एंड ये जो होता है ना आज का अभी सोशल मीडिया में जो ADHD होता है, आई मीन वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन समथिंग फॉर मोर देन 10 seconds. Instagram attention span. So ये छोड़ के focus on the newsletter, read people who are writing well, read them more and more, try to see the flow, try to develop that writer in you. आप ये जो creativity वाले fields है ना अभिषेक जी, मेरा एक personal opinion है. When it comes to graphics, when it comes to writing, these are all highly creative fields that you cannot be copied. Copy करना आसान नहीं होता. Copy करना भी मतलब you found out so soon that it doesn't make sense. एंड कॉपी करना ही नहीं, इवन दिस इज समथिंग जो कोई सिखा नहीं सकता. जैसा कोई सिखा आपने नहीं कहा, सकता. हाँ, यू गेव अ वेरी गुड सजेशन कि रीड मोर एंड मोर, एंड उन अच्छे राइटिंग्स में से आप क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट Exactly. दोज पोर्शंस, द वे ऑफ राइटिंग और वॉट एवर इट इज. ठीक है, वो आपने Exactly. बहुत सही कहा, क्योंकि क्रिएटिविटी समथिंग जो कोई सिखा नहीं सकता कभी नहीं. इट कम्स ओनली व्हेन यू ऑब्जर्व एंड यू कंज्यूम. Exactly. क्रिएटिविटी ऐसी चीज है जो कोई सिखा सकता. सो डेफिनेटली एक फ्रेशर राइटर के लिए, समवन हु इज ट्राइंग टू स्टेप इन इनटू दिस इंडस्ट्री, या कहीं पर स्टक्ड है, चाहे वो रेवेन्यू स्टेज पर हो या लर्निंग फेज में हो, ठीक है, आई एम श्योर ये सब कुछ फॉलो करके डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो ही कैन मेक हिम सेल्फ स्टैंड. ओके. बट Exactly. And what I सब. feel, Abhishek ji, I'd just like to add one thing. If हम्म. you're somebody who's starting out, who's listening to this video, I think you should want to be marketers first
writers later. बिकॉज ये जो Obviously. सिर्फ राइटिंग करने का ये है ना, मतलब विदाउट अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी, विदाउट अंडरस्टैंडिंग वर्क्स Exactly. इन Very true. मार्केटिंग, Very true. वो चीजों के वो फाउंडेशन के बिना अगर आप राइटिंग करोगे ना, यू कैन राइट पोएम्स, बट देन दैट बिकम्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग. दैट इज नॉट द काइंड ऑफ राइटिंग जो आपको महीने का लाख रुपया 10 लाख देने वाला है. नोबडी इज गोइंग टू पे यू दैट फॉर राइटिंग पोएम्स और प्रोसेस, यू नो. Hmm. आप ऐसे लिख सकते हैं जिसका अपना ये रहता है, आप रिसर्च पेपर्स लिख सकते हैं, टेक्निकल राइटिंग है, वो सब अलग चीजें हैं. दैट इज आउटसाइड ऑफ द domain of discussion that we are having now. This is what we are talking about, is creative writing, persuasive copywriting, content writing. ये सब जो भी है, ये सब के लिए मतलब you have to that thing is there. And the other point I wanted to say is that you Hmm. can when people are signing up for all of these newsletters, they are curating all the resources into a swipe file. Common अभी फंडा बन गया कि मैं swipe file बनाऊंगा. So सब कॉपी कर लेते हैं, हेडलाइंस सब एक डाल देते हैं, 10,000 लाइंस हेडलाइंस का एक swipe file बन जाता है. And then the next project, you literally copy paste that into your client thing, just changing a couple of words here and there, which is not great. I mean, आप स्वाइप फाइल भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्यूरेट करिए. ये क्रिएटिव फील्ड्स में इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू बी इंस्पायर्ड, टू अंडरस्टैंड व्हाई समथिंग वर्क. अभी आप जो 1920s में 1940s में गैरी हेल्बर्ट ने लिखा था, वो हेडलाइन लेके पियानो वाला एक फेमस हेडलाइन है, which was a Okay. very famous one, where it goes like, they laughed at me when I sat at the piano, but when I started to play. इतना curiosity वाला headline है, but and people started copy pasting this everywhere, literally. They laughed at me when I sat at the computer, but when I started to type, मतलब कुछ भी literally without context, without anything, accounting के लिए, सब niche के लिए, so then it becomes meaningless. So whatever you do, like even graphics, good people who are good writers, good graphics people and all this, वो लोग भी swipe बनाते हैं, but they get inspired by that. So they might take one or two elements from out there, but then eventually, if you want to grow big, it has to be your own work. And आपका नाम आना चाहिए कि यार ये संतोष का काम है, ये अभिषेक जी का काम है, न Very कि true. ये मैंने कहीं पे देखा हुआ है. Hmm. That is what is important. Something जो Please खुद continue. and after and I think ये सब कुछ एक ही कंक्लूजन पे आ जाता है कि इतना आप अपने खुद से क्रिएटिविटी तभी लगा पाओगे अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो, एंड आपका Uh, जो रिसर्च पार्ट है वो अच्छा है, क्योंकि वरना आप सिर्फ कॉपी ही करते रहोगे, क्योंकि आपको क्लाइंट को सर्विस तो देना है, कैटर करना है. तो अगर आपकी खुद की क्रिएटिविटी चल नहीं पाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कॉपी कर करने लगोगे. एंड See, जो आपने I कहा would कि like to add वो to that. I would like to add to that कि sense of humor is one thing. क्या हो रहा है कि मतलब see, some people naturally have a very good sense of humor. राइटिंग में कुछ लोग इंट्रोवर्टेड रहते हैं, लेकिन राइटिंग में उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है. कुछ लोग बात करने में मजाकिया होते हैं, लेकिन उनका राइटिंग में मतलब इट्स वेरी सीरियस. द राइटिंग वॉइस दैट यू हैव इज अ बिट डिफरेंट, एंड व्हेन यू राइट अ लॉट यू कम टू नो अबाउट इट. सो व्हाट हैपेंस इज, इफ हैविंग सी द बेस्ट वे टू परसुएड समबडी इज थ्रू अ जोक. अगर आप किसको हंसा सकते हैं तो उनको मतलब विन कर सकते हैं. इफ यू कैन मेक अ मैन लाफ, दे कैन विन हिम ओवर. कभी वॉर ही नहीं हो, कभी कुछ हो ही नहीं, मतलब लोग हंसते रहे, तो यही बेस्ट आइडियल सिचुएशन. बट ये बिल्कुल जो एडवाइस है, व्हेन यू गिव इट टू समबडी हु इज न्यू, प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि दे ट्राई टू बी फनी. प्रॉब्लम इधर हो बिल्कुल जाता है कि दे ट्राई टू इंसर्ट समथिंग दैट दे हैव, कोई स्वाइप फाइल से इधर उधर से निकाल दिया. एंड ये बैकफायर बिग टाइम करता है जब आप और किसी कल्चर के लिए लिख रहे हैं. सपोज यू आर राइटिंग इट फॉर समबडी इन द यूएस, जहाँ पे उनका जो लिखते तो वो लोग भी इंग्लिश में, हम लोग भी हैं, पढ़ते थे वो भी इंग्लिश है, लेकिन जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो कॉन्टेक्स्ट है एक जोक का, और जो आपका फिर हुक रहता है, जो फनी होना चाहिए, वो अगर इफ इट इज नॉट साउंडिंग राइट, लाइक अ नेटिव इज एक्सपेक्टिंग कि यार ऐसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर में ऐसा होना चाहिए, देन इट क्लिक्स एंड देन दे फाइंड इट फनी. अगर वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, देन इट बैकफायर्स बैडली. So the problem बिल्कुल. is with somebody who tries to be funny. So that will happen over time. And ये और एक इसमें पहलू है कि some brands, like one brand that I write for, it's an email marketing company. They want me to be very sporty, very vivacious. मतलब एक fresh voice चाहिए उन्हें. It's okay if it is a little humorous, if it is a little this thing. Problem नहीं, because they are talking to all new entrepreneurs, young entrepreneurs in the US and all that. So उनको उनका brand voice वैसा चाहिए. Whereas if I was writing for maybe Clavio बोलेगा यार ये तो तुम तो मतलब हम लोग इधर ब्रांड बना रहे हैं, आप तो ब्रांड की धज्जियां उड़ा रहे हैं यहाँ पे, आप जोक कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. हमारा तो we are more, e-commerce, we are the big guys.
So this is how we want our brand to be represented. ये हमारा brand voice styling document है भाई, इसके हिसाब से चलो. So कहीं ना कहीं, I mean, everything that you hear in this interview, you have to take it with a pinch of salt, because there are many situations जहाँ पे वो apply होगा 100%, और many situations जहाँ पे apply नहीं भी हो सकता है. वे टू आपको एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट यू नीड टू बी स्मार्ट एनफ कि आप क्लाइंट के हिसाब से इंडिविजुअली कैटर कर पाओ. आप सेम सेंस ऑफ ह्यूमर सब में नहीं लगा सकते. सही बात है. वे राइट. एंड इसके लिए जो आपने एक पॉइंट पहले कहा था संतोष जी, दैट वाज वेरी करेक्ट कि आपको राइटर बनने से पहले एक मार्केटर बनना पड़ेगा, क्योंकि यू नीड टू 100%. अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी. आपको सिर्फ लिखना नहीं है. राइट, वेरी ट्रू. Yes. एंड व्हेन वो साइकोलॉजी आप समझ जाओगे तो ये आई थिंक ये सेंस ऑफ ह्यूमर वाली गलती भी नहीं होगी कि नहीं अगर आप होगी. एक बार साइकोलॉजी को टारगेट करना, ट्रिगर करना समझ जाओगे तो. एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू बी अ मार्केटर फर्स्ट. वेरी वेरी ट्रू विद दैट. एंड तो आई लाइक टू हाईलाइट वन थिंग हियर कि एज आपकी एजेंसी द मेन फोर्टे इज राइटिंग एंड copywriting, so the type of clients which you cater, okay, and जिस तरह की difficulties आती हैं, okay, is it very much different from a digital marketing agency जो बाकी सारे services या complete digital marketing services provide कर रहे हैं, या client के expectations कुछ अलग होते हैं? What are the things, please उस पे थोड़ा highlight आप करिए. See, the more or less the clients are the same. जो Okay. क्लाइंट हम लोग टारगेट करते हैं एज अ कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी और कॉपी राइटिंग एजेंसी, दैट you're likely to target the same clients that the digital marketing agencies offering full funnel services are going to do as well. But इसमें एक दिक्कत क्या हो जाती है कि see, if you are specifically into content and you're specifically into copy only, for example, I'll give you an example. Now when you're sending out e-commerce emails Okay. for a client, दो ऑप्शंस हैं. एक तो आप फुल टेक्स्ट वाले ईमेल्स भेज सकते हैं, व्हिच आल्सो कन्वर्ट डिपेंडिंग ऑन द पोजीशनिंग, डिपेंडिंग ऑन द ऑफर कैसा क्या है, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स ब्लैक फ्राइडे और नॉट. और आप चाहिए तो फुल एचटीएमएल वाले ब्रांडेड ईमेल्स भी भेज सकते हैं, राइट? वो भी कन्वर्ट होते हैं. मतलब दैट आल्सो डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. सो अभी आपके पास डिजाइनर नहीं है, आप ईमेल्स डिजाइन नहीं करते, आप सिर्फ कॉपीराइट कर रहे हैं. So then you become a part or a cog in the wheel. You become one part of the ecosystem. अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कॉपी कर लूंगा और मेरा कॉपी हो गया है, या मेरा पेमेंट हो गया, मेरा काम हो गया है, it doesn't work that way. So you become, your copy is on a landing page. अगर landing page कल convert नहीं हो रहा है, you have an accountability in that. आपका you have to own up to that as well, to see where you can optimize your copy. लैंडिंग पेज का सीआरओ देखना है कि अपने कॉपी में कोई प्रॉब्लम है, कि हेडलाइन चेंज करना है, कि एबी टेस्ट क्या करें. सो इट डजंट एंड विद जस्ट पेनिंग डाउन समथिंग एंड सेंडिंग इट टू द क्लाइंट. सो कहीं ना कहीं इफ यू आर ऑफरिंग अ फुल डिजिटल मार्केटिंग फनल सर्विस, ये मतलब eventually you have somebody or the other. There is somebody who's looking into emails, there is somebody who's doing automation, somebody who's doing the landing page design, कोई और है जो सोशल मीडिया देख रहा है. तो मतलब it is within the company, but as a copywriting or a content marketing agency, you have to understand that your thing doesn't end there. Very true. Optimizations है, iterations है. So फिलहाल तो मैं I also do a little bit of content for my one client only. I don't market it as a content marketing agency, because then बाद में you get into a lot of other things including SEO, which I do. So एक client है जिसके लिए I do a lot of deep work, so उसमें ये content writing भी हो जाता है. So that is how I have my knowledge of the content marketing वर्ड. बट दैट इज व्हाट आई हैव सीन, कि मैं कोई कंटेंट भी हो तो मैं लिख के ये नहीं बोल सकता कि मैंने ऐसे ऑप्टिमाइज कर दिया है, अभी सेकंड इटरेशन थर्ड इटरेशन के बाद में तो मैं चार्ज करूंगा, ये करूंगा, वो कर. ऑब्वियसली यू कैन डू दैट व्हेन यू हैव दैट लेवल. आपका वो ओहदा है जहाँ पे आपने इतनी अच्छी कॉपी लिखी है कि आपने एक हो गया, एक ड्राफ्ट हो गया, एक फाइनल वर्जन हो गया, क्लाइंट ने दिया, एक एडिट हो गया, एंड इट्स गुड टू गो. वो दैट इज अ डिफरेंट स्टेज. But when you're starting out, you definitely have to, see where your responsibilities lie and go out of your way to make sure that even if, for example, अगर मेरा कोई landing page design होता है ना, तो मैं client को copy तो देता हूँ, but at the same time I also tell him, भाई ये font में करो, ये बड़े size में करो, इसको highlight करो, इसको underline करो, ये चीजें करो, so that this looks prominent. So कहीं ना कहीं if you give those inputs as well, the client values you as a marketing consultant. Don't just be a copywriter or a content guy. पर वर्ड का इतना, फिर बाद में क्लाइंट भी आपको वही तरीके से देखेगा, बोलेगा अरे इसका एक 1 रुपी पर वर्ड है, इसका 50 पैसा पर वर्ड है, देखो क्या करना. Because you are not offering anything of value, you're not bringing anything of value to the table. So be more of a consultant, where if you know something,
लैंडिंग पेज का या फिर ईमेल्स का. फॉर एग्जांपल इफ आई एम डूइंग ईमेल्स, आई विल आल्सो टेल द क्लाइंट यार आपका क्या स्केड्यूल क्या है, आप कितने फ्रीक्वेंटली भेजने वाले हो, और अभी करंटली आपका स्टेट क्या है, कितने एंगेज क्या आपकी लिस्ट, आपके कितने अनसब्सक्राइब्स है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. सो इट इज माय ड्यूटी टू मेक श्योर दैट ही हैज अ गुड इकोसिस्टम, advise him on that as well as audit what he has right now, as well as provide him a solution. So kahin na kahin we have to, the challenge of a copywriting or a content marketing agency would be to coexist with the other elements for which you're not getting paid. So at some point you'll बिल्कुल also have to draw the lines and all that, but then if you can offer value as a consultant where the client sees that you're bringing in a lot of value, you're not just another copywriting agency जिसको पैसा देके खरीदा जा सकता है, आप जो ला रहे हो और कुछ और कोई चार्ज कर रहा हो 1 घंटे के लिए. सो समवेयर आई फील बिल्कुल बिल्कुल इनिशियल पार्ट में आपको ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करता है, बिकॉज़ पीपल ट्रस्ट यू मोर, बिकॉज़ यू आर गिविंग देम मोर. बिल्कुल एंड आई थिंक ये चीज जैसे सिर्फ एजेंसीज में नहीं किसी भी बिजनेस में काम आता है, चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस ही क्यों ना हो. इफ यू हैव एन ऑफलाइन स्टोर, ठीक है, एंड जहां पर आप ये हाईलाइट करते हो कि वी आर नॉट जस्ट सेलिंग, वी आर प्रोवाइडिंग यू द सॉल्यूशंस. यप. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक डेकोरेटिव लाइटिंग की शोरूम है, राइट, एंड इफ दे हाईलाइट, जैसे मैं खुद एक इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस आल्सो, ठीक है, दैट आई विजिटेड अ लाइट शोरूम. ओके, तो दे वर नॉट जस्ट सेलिंग, दे हैड एन इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है, जो हर कस्टमर को लाइट्स के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे वाओ. कि हाँ आपके जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जहां पे आपको लाइट फिक्स अप करना है, उसके लिए कौन सी लाइट सही रहेगी. तो जो ट्रस्ट बेस बना एंड जो उनके उनके पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, शॉप के लिए, शोरूम के लिए जो वैलिडिटी क्रिएट हुई, ठीक है, उन्होंने उस टाउन के मोस्ट प्रेस्टिजियस लोग भी विजिट करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि कूल. दीज आर सम पीपल जो सिर्फ बेच नहीं रहे, आपको सही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है. सो डेफिनेटली ये चीज बिल्कुल सही है कि आपको सिर्फ बेच कर निकलना नहीं है, यू हैव टू प्रोवाइड सॉल्यूशन टू क्लाइंट्स. वेरी ट्रू. एंड डेफिनेटली ये दोनों चीज मतलब बोथ ऑन एजेंसी एंड एज अ राइटर ऑल्सो आपने बहुत कुछ शेयर किया है फॉर देम, चाहे वो कोई एक फ्रेशर राइटर हो, एक न्यू कमर हो, या स्ट्रगलर राइटर हो, या कोई एजेंसी ओनर हो. आई थिंक इट वाज अ very informative session for both of these guys. Okay, uh, so thank you very much, Santosh ji, for this session. माय Okay, प्लेजर. and I'm very much sure बहुत informative था ये, बहुत ज़्यादा, even for me as well. I came to know about various experience. Okay, and I'm very much sure कि जो भी नए राइटर इसको देखेंगे, या नए एजेंसी ओनर्स और प्लानिंग टू सेट अप देयर ओन कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, उनके लिए बहुत कुछ था आपके एक्सपीरियंस से सीखने को, बिकॉज रियली आपका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, ठीक है, एंड यू हैव क्रॉस्ड अ लॉट्स ऑफ फेजेस, राइट. सो डेफिनेटली जो भी देखेगा उसके पास इससे एक्सट्रैक्ट करने को ऑब्जर्व करके बहुत कुछ होगा, राइट. No, सो definitely. थैंक It यू, was a pleasure talking to you, थैंक यू Abhishek ji, फॉर and टाइम. I hope everybody who's listening to this, I think you should. The most important thing is success में ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो तो important है, लेकिन it's also the ecosystem that you are a part of, the kind of बिल्कुल. people that you're talking to every day, the people that you're learning from every day, and वो ecosystem आपके आजू बाजू में physical हो ये जरूरी नहीं है. So it could be an ecosystem like UppSkill where you have mentors who are बिल्कुल. available. It's a WhatsApp group where constantly talking to people who are all on the same wavelength. तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा important होता है success के लिए than the other small things that we keep talking about. So I believe if you are serious about getting into digital marketing as a professional and a long-term view on career, then you should definitely look at somebody like UppSkill who can get you started, keep you running, keep you going, and also give you a long term, we are talking about careers here. We are not just talking about chalo kahin na kahin isko job lag gaya, ye ho gaya, wo ho gaya. Ye to short बट term फॉर thinking अ है. लॉन्ग रन, फॉर अ For a लॉन्ग long run, रन, फॉर definitely. अ लॉन्ग रन एक अच्छी कम्युनिटी का पार्ट होना बहुत जरूरी होता है, एंड दैट्स व्हाट Very true. वी बिल्ड हियर. एंड इसीलिए कम्युनिटी को अगेन कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए वी आर सिटिंग हियर. अभी मैं और Absolutely. आप भी जो बात कर रहे हैं वो भी इस कम्युनिटी को ही कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए कर रहे हैं. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. Thank काफी you, बिजी Abhishek ji. It was a शेड्यूल pleasure. में से यू टुक आउट सम टाइम फॉर अस. थैंक्स No worries. थैंक यू फॉर Anytime. दिस. थैंक यू. Thank you so much. Take care. Bye.